तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो भाई इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन्स के जितने भी ड्रैगन्स हैं ना, उन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। एक मुझे वीडियो यूट्यूब की वीडियो के थ्रू ये एक रिएक्शन वीडियो बनाने का एक वीडियो मिला है, जिसमें कि उस बंदे ने सारे ड्रैगन्स के बारे में बताया जो कि एनकाउंटर जिनका हुआ था हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज में। तो भाई हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज जिसको ना पता हो तो ये एचबीओ प्रीमियर सीरीज थी, एचबीओ ओरिजिनल्स की। तो उसके अंदर क्या था कि जो आपने जिस बंदे ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, जिस बंदे ने उसका सारा जिसका बंदे को पता है उसके बारे में, तो उस बंदे को पता होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जो ड्रैगन का टारगेरियन जो होता है, वो टारगेरियन सारे ड्रैगन राइडर्स होते हैं। तो इसमें वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उससे भी पुरानी कहानी, जो जिन बंदों ने हाउस ऑफ ड्रैगन्स देखी होगी, पहला और दूसरा सीजन उसका आ चुका है, जिसके अंदर आपको बेसिक ड्रैगन्स के बारे में पता ही होगा। जो उसमें सी स्मोक है, वर्मिथॉर है, वेगार है, तो ये सब ड्रैगन्स एक एक करके मैं इसमें लेवल वाइज बताऊंगा कि कौन कितना पावरफुल ड्रैगन होने वाला है। तो सबको पता होगा बेलेरियन जो है वो सबसे ताकतवर है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ड्रैगन किस किस में जो हैं, कौन कौन से नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो भाई ये बंदा है क्वर्की बाइट्स करके, तो इस बंदे ने डाल रखी है वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है। तो इसमें हर एक उसके अंदर ड्रैगन बताया हुआ है इसने, तो उसमें देखते हैं। अब अभी इसने स्टोरी भी बता रखी है कि कौन सा कहाँ पे मिलेगा आपको, तो उस हिसाब से अब देखते हैं कि कौन सा ड्रैगन कितना उसका होता है। Let's kick things off with the dragons we've already seen, starting with the iconic Cyrax. First up, we have Cyrax, the giant yellow-scaled she-dragon ridden by Princess Rhaenyra Targaryen. Cyrax has been with Rhaenyra since 104 AC, and we see them flying high over King's Landing in the very first episode. Cyrax is an impressive beast, not only for her size, but also for her fierce loyalty to Rhaenyra. One of the most memorable moments early on is the standoff between Cyrax and Daemon Targaryen's dragon, Caraxes, highlighting the intense family dynamics and power struggles at play. Cyrax is still active and laying dragon eggs, which is super exciting for the future of House Targaryen. In one of the episodes, we see her lay 3 eggs, setting the stage for even more dragon riders and more dragon drama in the seasons to come. भाई जो सायरेक्स था ना, सायरेक्स आपने देखा होगा, जो उसकी प्रिंसेस होती थी ना, रेनेरा टारगेरियन, तो वो जिसको राइड करती थी और ये बिल्कुल ही गोल्डन कलर का होता था। तो सायरेक्स का बेसिक मतलब, मुझे जहाँ तक मैंने उसके पुराने बारे में पढ़ा है, तो सायरेक्स की बेसिक स्टोरी ये है कि सायरेक्स के जो वो थे पूर्वज, मतलब जो ड्रैगन था जिसके थ्रू सायरेक्स का जन्म हुआ था, तो वो यूनिक था अपने आप में। तो सायरेक्स अपने तरीके का ही एक एकमात्र मतलब अकेला इकलौता ड्रैगन था जो पूरे हाउस ऑफ ड्रैगन्स के अंदर दिखाया हुआ है। उसके बाद आता है करेक्सिस। Next, we have Caraxes, known as the Bloodworm. This large red dragon is ridden by Daemon Targaryen, who became Caraxes' rider in 105 AC after the death of Prince Aemon Targaryen. Caraxes made a huge impression from the get-go, showcasing both his fearsome nature and his bond with Daemon. Despite his menacing appearance, Caraxes has shown moments of tenderness with his rider, adding depth to his character. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. Caraxes is a key player in the Dance of the Dragons, and the trailers and episodes hint at some epic aerial battles to come. Watching Caraxes in action is always a thrill, especially when we get to see his ferocity in full display. The Silver Grey Dragon Seasmoke is another fascinating character. Laenor Velaryon, son of Rhaenys Targaryen, became Seasmoke's rider by 101 AC. Their debut in episode 3 of season 1 was spectacular, especially during the battle against the Crab Feeder in the Stepstones. Although Laenor fakes his own death and goes into hiding, leaving Seasmoke behind, the dragon remains an important asset. Currently residing in Driftmark. भाई लास्ट एपिसोड ऑफ हाउस टारगेरियन में, मतलब हाउस ऑफ ड्रैगन्स में, जो टारगेरियन ग्रुप का एक बंदा होता था, जब ये वर्मिथॉर का राइडर ढूंढते थे, तो सी स्मोक के पास भी कोई राइडर नहीं होता है। तो हाउस ऑफ ड्रैगन में 6th एपिसोड के अंदर एक इसे नया राइडर मिलता है, जो कि इनके टारगेरियन ग्रुप खानदान का ही होता है। तो उसमें आप देख सकते हो। Seasmoke's fate and potential new rider remain a tantalizing mystery for future episodes. Rhaenys Targaryen, known as the Queen Who Never Was, rides Meleys, the swift red and pink she-dragon also known as the Red Queen. Bonded in 87 AC, Meleys was once one of the fastest dragons, and her appearance in episode 5 of season 1 was a highlight. With a crown of thorns around her head, Meleys made a dramatic entrance during Aegon II's coronation, causing chaos without killing her enemies. Rhaenys pledges her dragon to Rhaenyra's cause, promising some thrilling action in the skies above Westeros.
Prince Jacaerys Valerian, Rhaenyra's son, rides Vermax, a young green dragon who hatched in his crib. Despite a rocky start, by the season 1 finale, Jace and Vermax have formed a solid bond. Vermax, who dislikes cold weather, is set to accompany Jace to the Eyrie and Winterfell in future seasons, promising some intriguing interactions as they seek support for Rhaenyra's claim. भाई ये वेगार जो था ना ये मतलब बहुत ही कोल्ड एंट्री दिखाई हुई है क्योंकि इसने बहुत से ड्रैगनों को मारा है खुद से ही और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना ड्रैगन है। वलेरियन के बाद इसका साइज बताया जाता है सबसे बड़ा। Vhagar, one of the 3 dragons that helped Aegon the Conqueror, is a legendary creature. Initially ridden by Queen Visenya, Vhagar later bonds with Laena Velaryon and then Aemon Targaryen. Aemon's claiming of Vhagar was a dramatic moment, leading to a fight where he lost an eye. Vhagar's role in the Dance of the Dragons is pivotal, especially after killing Prince Lucerys and his dragon Arax. This ancient dragon, now ridden by Aemond, is set to bring even more fire and fury to the upcoming war. Dreamfire, a slim blue she-dragon with silver wings, once belonged to Princess Rhaena Targaryen. Currently residing in the Dragon Pit at King's Landing, Dreamfire is a potential game-changer in the Civil War, waiting for a new rider to claim her. Some theories suggest Dreamfire might have laid the eggs that became Daenerys' dragons in Game of Thrones, adding another layer of intrigue to her story. वन वर्मिथॉर भी क्लेम हो चुका है, इन्होंने क्लेम बता रखा है, लेकिन वो भी लास्ट एपिसोड में उसे एक राइडर क्लेम कर लेता है, वर्मिथॉर को भी और सी स्मोक को भी, दोनों क्लेम हो जाते हैं। Vermithor, the bronze beast known as the Bronze Fury, was once ridden by King Jaehaerys I. Unclaimed at the start of the Dance of the Dragons, Vermithor's appearance in the season 1 finale, when Daemon sings to lure him out, hints at a major role in the conflict to come. Finding a rider for Vermithor could be crucial for Rhaenyra's side in the war. The small, agile Arax, ridden by Prince Lucerys Valerian, met a tragic end in the season 1 finale, killed by Vhagar above Storm's End. Arax's death is a poignant moment, underscoring the brutal nature of the dragon battles to come. Valerion the Dread. Valerian सबसे ताकतवर ड्रैगन बताया जाता है। The beast that Aegon rode across the sea. Though Balerion the Black Dread doesn't appear alive in House of the Dragon, his presence looms large. Aegon the Conqueror's dragon and later ridden by Viserys the Fur, Balerion was a massive black-winged dragon with a fierce temperament. His skull serves as a reminder of the Targaryen legacy and the power of dragons. In addition to the dragons we've seen, there are several more we'll encounter in the series. Sunfire, Moondancer, and Silverwing are among the full-size dragons, each with their unique traits and riders. The latest trailers and episodes have given us glimpses of these magnificent creatures, promising more epic dragon action. Beyond the bonded dragons, there are 3 wild dragons on Dragonstone: Grey Ghost, Sheepstealer, and the Cannibal. These unclaimed dragons represent a wild card in the Civil War, as both sides vie for their allegiance. अनक्लेम्ड नहीं थे गाइस, तो इसमें बताया हुआ है, जो मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। तो 3 जो ड्रैगन थे ना जो बाहर के बताए हैं, एक वो जो शीप स्टेलर करके बताया हुआ है जो भी है, तो ये लोग थे अपने ही टाइप के ऐसे ड्रैगन जिन्होंने कभी भी कोई राइडर चुना नहीं, मतलब ये अपने आप को वो नहीं बनाना चाहते थे किसी का गुलाम। तो ये तीनों अपने आप में, एक कैनिबल जो है वो तो इंसानों को भी मार देता था, मतलब वो उसने बहुत मारे, वैसे इंसानों को तो सब मारते, लेकिन कैनिबल नाम ही उसके लिए इसलिए पड़ा क्योंकि उसने बहुत लोगों को मारा था। Grey Ghost is known for his elusive nature. He's described as shy and reclusive, rarely seen by anyone, and prefers to hunt fish around Dragonstone. His gray scales help him blend into the sea and sky, making him one of the most difficult dragons to spot. Because of his elusive behavior, not much is known about Grey Ghost's temperament or fighting capabilities, but his presence adds a mysterious element to the Targaryen arsenal. Sheepstealer is another intriguing wild dragon, known for his habit of preying on sheep. Unlike Grey Ghost, Sheepstealer is more aggressive and has been seen more frequently by the locals of Dragonstone. His brown scales make him less visually striking, but his ferocity is not to be underestimated. Sheepstealer eventually bonds with a lowborn girl named Nettles, one of the few instances where a dragon bonds with someone outside the Targaryen bloodline. This unique pairing highlights the unpredictable nature of dragon rider bonds. The Cannibal is perhaps the most fearsome of the wild dragons. He earned his name due to his penchant for devouring other dragons, including their eggs and hatchlings. The Cannibal is described as a massive black कैनिबल जो था गाइस, कैनिबल भी दूसरे ड्रैगन्स को खा लेता था।
scaled dragon with a brutal and savage nature. No one has ever dared to claim him, and he remains a wild and deadly force on Dragonstone. His presence is a constant threat to both sides of the Civil War, and his potential involvement in the conflict could tip the scales dramatically. While the show covers many dragons, there are a few mentioned in the novels that may not appear on screen. These include... You should absolutely stop trading in 2025 because you don't need to analyze any kind of patterns, you don't need to spend. Known as the Blue Queen, Tessarion is a beautiful dragon with cobalt blue scales and copper eyes. She is ridden by Prince Daeron Targaryen, the youngest son of King Viserys I. Tessarion is known for her grace and agility in the air, and her distinctive appearance makes her one of the most visually striking dragons in the Targaryen fleet. Tyraxes is ridden by Prince Joffrey Valerian, the third son of Rhaenyra Targaryen. Though not as large or fearsome as some of the other dragons, Tyraxes is still a formidable presence. His bond with Joffrey represents the younger generation of dragon riders stepping into their roles during the Dance of the Dragons. Stormcloud is a hatchling dragon bonded to King Aegon III, also known as Aegon the Younger. Despite his small size, Stormcloud plays a significant role in Aegon III's life, particularly during his escape from the downfall of King's Landing. Stormcloud's bond with Aegon III highlights the enduring connection between the Targaryens and their dragons, even in times of great peril. These hatchling dragons are bonded to Princess Jaehaera and Prince Jaehaerys Targaryen, respectively. Though too young to participate in the larger battles of the Dance of the Dragons, their presence signifies the continuing legacy of House Targaryen. Morgul and Shrikos represent hope for the future, as the Targaryen line endures through their young riders. These dragons add to the rich tapestry of House Targaryen's history and the grandeur of the Dance of the Dragons. Even if they don't make it onto the screen, their stories in George R.R. Martin's novels provide depth and context to the epic saga. So who's your favorite dragon so far? And which dragon rider pair are you most excited to see in action in future seasons? Let us know in the comments below. Don't forget कमेंट में लिखो भाई तुम्हारा ड्रैगन कौन सा है, सबसे फेवरेट ड्रैगन कौन सा है भाई, ऐसे छोड़ना मत भाई देखने के बाद ना। तो गाइस चलो यहाँ तक की थी वीडियो सारी, बस इसमें हमने आपको बताया कि ड्रैगन कौन कौन से थे हाउस ऑफ ड्रैगन में। जिसने भी हाउस ऑफ ड्रैगन देखी होगी उसे पता होगा कि भाई क्या ही कोल्ड सीन होते हैं उसके अंदर ड्रैगन के एंट्री के। तो फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई हाउस ऑफ ड्रैगन देखो, पहला सीज़न, दूसरा सीज़न, 2 सीज़न आ चुके हैं इसके। और भाई जिसने देख रखा है, जो मेरी वीडियो किस तक पहुँचेगी है, वो बंदा कमेंट करो भाई कि तुम्हारा फेवरेट ड्रैगन कौन सा है, तो उसको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा भाई, हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। जस्ट कमेंट करो। और जिसके पास वीडियो जा रही है, जो देख रहा है भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं। बस भाई सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, ऐसे मत छोड़ो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।